let's go to the starting lesson number 7. I will start with this MLM missing line measurement. इस तरह इंस्ट्रूमेंट हमारा एक पॉइंट पे हमने सेट किया टारगेट 1 टारगेट 2 और स्टार्टिंग पोजीशन जहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं 1 पॉइंट से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में डिस्टेंस उसका हॉरिजॉन्टल एंगल और उसका डिस्टेंस वगैरह और MLM first we go to the menu and then come to the page number 3 MLM. Select MLM and then the following sequence display. Press function screen and add the height of prism instrument and then press OK. Target height वगैरह हम देने के बाद और press OK करेंगे हम. Set the first point and then पहला पॉइंट सेट करने के बाद इसको मेजर करेंगे. Set the second point then press MLM. सेकंड पॉइंट ऑब्जर्व करने के बाद उसको MLM करेंगे, मेजर नहीं करेंगे हम. The screen showing this slope horizontal and vertical and distance between the 2 points. MLM करेंगे तो हमें फर्स्ट पॉइंट से सेकंड पॉइंट इसमें हमें साइड स्लोप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस वगैरह हमें मिल जाएगा. इस हम थर्ड पॉइंट की तरफ जाएंगे. उसको MLM करने के बाद यस सेट द थर्ड पॉइंट एंड MLM. How to know the coordinate for the point press function. इन पॉइंट के कोऑर्डिनेट जानने के लिए हम फंक्शन में जाएंगे. press coordinate select the point and enter. If you know want to know the distance percentage of the slope.